divided into many small steps. The first one is G1 phase. Okay, so this one is G1 phase. G1 is the phase where the cell grows. Okay, and the content in the cell increases to mean all the contents which are present in the cell, they grow, they increase in their volume because the cell is preparing for division. The cell is preparing for the cell division. So what basically happens in G1? In this G1, you can write it in your copy also. In the G1 phase, or this is also known as gap phase. Okay, gap phase 1. This G1 phase is also known as gap phase 1. Okay, and what we are learning? We are learning about the cell cycle. So we should have, so that we can have an idea how the process of mitosis take place and what are the steps which take place during two mitotic cell division. So the whole cell cycle, it is divided into many small steps, and this is the first step which is known as G1 phase or the gap phase 1. Okay, now here the period of growth, this is what the period of growth where the cell grows in its size, the cell mass increases. Okay, and the time for which this G1 phase takes place, it is about 6 to 8 hours. Okay, so the G1 phase, it takes 6 to 8 hours, and because of that you can see it has covered most of the part of this circle. Okay, because it's a long phase and it takes 6 to 8 hours for the growth. The next one is S phase. S phase is also known as the synthesis phase. Okay, यहाँ पे एक और चीज लिखी है, the G1 phase, it is directly related to cell growth. तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है, cell growth. ठीक है. Now the second one is S phase. S phase के यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? DNA replication. Okay, so S phase is also known as the synthesis phase. And what is basically synthesized here? Here the DNA replication takes place. So one more copy of DNA is formed, because when the cell is going to divide, the divided cell also needs one copy of DNA. Therefore, the cell is preparing here and DNA is divided, DNA has replicated. Replication मतलब अपनी एक और कॉपी बनाना. ठीक है, और वो जो replicated copy वो क्यों चाहिए? वो चाहिए so that if one cell divides into two cells, one cell has one copy and another cell has another copy. इसीलिए जितना भी डीएनए है वो सारा डीएनए क्या हो जाएगा? रेप्लीकेट आ जाएगा. यहाँ आपको वर्ड याद रखना है, रेप्लीकेशन. So S is the synthesis phase. Okay, now the next one है this synthesis phase. It is also very long and it takes about 5 to 6 hours. ये जो पूरा S phase है या synthesis phase है, इसको for this phase to occur, the time required is about 5 to 6 hours. Okay, the next one is G2 phase. This one is G2 phase. And what happens in G2 phase? G2 phase, here the cell duplicates the material other than DNA. The DNA has already duplicated in this one S phase. So whatever cytoplasmic materials are present in the cytoplasm, for example, mitochondria, chloroplast, ribosome, these all material doubles themselves in the G2 phase. So all the cell content, it becomes double except the DNA. Okay, so all the things get double. So the cell duplicates. And then what is the difference between G1 phase and G2 phase? What is the difference between G1 and G2? Yes, ma'am. Okay, G1 is simply growth. If the mitochondria is smaller in size, it will grow to its full size. If the cell is smaller in size, it will accumulate more amount of cytoplasm and it will grow to its full size. This is the difference. Nothing will be doubled in G1 phase, right? केवल सेल की ग्रोथ होगी जिसमें छोटे जो सेल ऑर्गेनल वो बड़े हो जाएंगे, साइटोप्लाज्म बहुत सारा इकट्ठा हो जाएगा, बट कोई भी नई चीज फॉर्म नहीं होगी, केवल ग्रोथ होगी. आई बात समझ में? जबकि G2 में क्या हुआ है? G2 में सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है एक्सेप्ट द डीएनए, दे विल डुप्लीकेट. ओके, and the time which is required for the G2 phase, it is around 4 to 5 hours. Okay, G2 phase के लिए जो time चाहिए, that is around 4 to 5 hours. Okay, अब एक और बात important है, this G1, this S and this G2. You can find a white line here. ये पूरा आपको white line दिखाई दे रही है. यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये interphase. Collectively G1 plus S plus G2, they all are
included in a common phase which is known as interphase. ओके, इन तीनों को कंबाइंड वे में हम कौन सा फेज कहते हैं? इंटरफेस, ठीक है, ओके। और इंटरफेस जो है, इंटरफेस एक कॉम्बिनेशन है इन तीनों के। आप जब when you come to the school after 3 or 4 lectures you have your interval. so interval का मतलब क्या है? दो कॉन्जिक्यूटिव पीरियड्स के बीच में जो फेस आता है जहां पे आपको रेस्ट मिले, ठीक है। तो उसी तरह से दो माइटोटिक डिविजन के बीच में एक रेस्टिंग फेज आता है। इस रेस्टिंग फेज को हम क्या कहते हैं? इंटरफेज। and why it is necessary? It is necessary so that the cell prepares, cell takes rest, cell conserves energy, cell conserves the cytoplasm and it gets ready for the cell division. अब तक सेल डिवीजन नहीं हुआ, केवल सेल की प्रिपरेशन चल रही है। तो दिस इज ऑल, ये जो तीनों फेज हैं आपके, इन तीनों फेज में क्या हुआ है? इन तीनों फेज में सेल ने प्रिपेयर किया अपने आप को सेल डिविजन के लिए, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वन हियर इज द मेन सेल डिवीजन। इसके बाद आपका स्टार्ट हो जाता है माइटोटिक सेल डिवीजन। इंटरफेज के बाद पहला आपका माइटोटिक डिवीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ तक जाएगा। उसके बाद जैसे ही माइटोसिस खत्म हो जाएगा फिर से ये लंबा वाला इंटरफेस आ जाएगा, रेस्टिंग फेज। ये बात आपको समझ में आई? बिटवीन two mitotic division there is a resting phase and the resting phase is known as the interphase. okay now मैम हाँ बोलो। मैम ये बुक के डायग्राम में G0 भी दिया हुआ है तो वो क्या है? क्या क्या? बुक के डायग्राम में G0 भी दिया हुआ है। अच्छा, मैं देख के बता दूंगी आपको, ठीक है ना? ओके ओके मैम। ठीक है, वो बता दूंगी मैं आपको इस क्लास के बाद। यहाँ नाउ यू विल सी हियर the cell division which is mitotic cell division, it is divided into these steps: prophase, metaphase, anaphase, telophase, ठीक है। so these are the 4 different steps in the mitotic cell division: prophase, pro मतलब स्टार्टिंग करना, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। ओके, टीलोफेज वर्ड आया टेल से, एंड पे। तो ये एंड वाला वर्ड यहाँ पे क्यों आया वो तो उसको डायग्राम देख के हमें समझ में आएगा। नाउ दिस ऑल इज द न्यूक्लियर डिवीजन। ये जो आपको 4 फेजेस नजर आ रहे हैं सेल डिवीजन के, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज, दिस इज ऑल द न्यूक्लियर डिवीजन। अब क्या होता है कि कोई भी अगर सेल अगर डिवाइड करेगा तो पहले तो उसका न्यूक्लियस डिवाइड होगा और उसके बाद उसका साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, ठीक है। सो द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज the karyokinesis. Karyo means nucleus and kinesis means breaking, ठीक है, या division. So these all phases, telophase, anaphase, metaphase and prophase, they are all a part of karyokinesis जहां पे न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है। अब न्यूक्लियस तो डिवाइड हो गया, न्यूक्लियस के बाहर क्या? साइटोप्लाज्म। तो एक सेल का जब न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो उसके बाद अब क्या डिवाइड होंगे? साइटोप्लाज्म के कंटेंट भी डिवाइड हो जाएंगे। आपको पहले ही मैंने बताया था सिंथेसिस फेज, सॉरी G2 फेज में साइटोप्लाज्म में ऑलरेडी सारे जो सेल ऑर्गेनल्स है वो डबल हो गए हैं, ठीक है। तो हाफ जो है वो एक सेल में चला जाएगा, हाफ जो है दूसरे सेल में चला जाएगा। सो द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म विल हैपन and the cell divides into 2 cells. So this is all outlook how the mitotic cell division takes place and what are the preparations which the cell has to do in the interphase, ठीक है। Now we will move to the next slide. Yes, this is the first step. Okay, ये karyokinesis का first step है। यहाँ पे it is already टाइम हो गया कितना? 12:45. ओके, तो यस, जस्ट मैं आपको एक दूसरी स्लाइड दिखा देती हूँ। कल से हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। ओके, आई एम मूविंग टू सम अदर स्लाइड। यस, ओके, यहाँ पे आप ये देख रहे हो कि दिस वन इज एनिमल सेल एंड दिस वन इज प्लांट सेल, ठीक है। नाउ द सेल डिविजन इन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल इज डिफरेंट। फॉर द एनिमल सेल टू डिवाइड, सपोज करो ये पूरा एक सेल है, ठीक है, यहाँ पे दिस इज होल अ कंप्लीट सेल, okay. Now this whole complete cell, one cell divides into 2 and for this
a furrow is formed. ठीक है, यहाँ पे ये जो आपको डॉटेड डॉटेड नजर आ रहा है, ये क्या है, ये यहाँ का क्या है, दिस इज द फरो. ओके, सो अ फरो इज फॉर्म विच डिवाइड द सेल इनटू टू. ओके, अब मैंने आपको बताया था कि जब माइटोटिक सेल डिवीजन होगा तो सबसे पहले क्या डिवाइड होगा, न्यूक्लियस. यहाँ पे देख रहे हो दो न्यूक्लियस बन गए. न्यूक्लियस, द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज फॉलोड बाय द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म, एंड द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज टर्म्ड एज डैश. जो न्यूक्लियस का डिवीजन होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक मैंने अभी टर्म बोला था, व्हाट इज दैट, Karyokinesis. कैरियोकाइनेसिस. ओके, एंड आफ्टर कैरियोकाइनेसिस यहाँ आप देख रहे हो कि न्यूक्लियर डिवीजन हो चुका है. अब जो सेल है वो प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को साइटोप्लाज्मिक डिवीजन के लिए, एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज द साइटोकाइनेसिस, राइट. Okay, now the arrow moves and the cell divides into two. Both have their own nucleus, both have their own cytoplasm. और साइटोप्लाज्म में क्योंकि सारे सेल ऑर्गेनल्स डुप्लीकेट हो गए थे तो दोनों ही सेल्स के अपने अपने सेल ऑर्गेनल्स और अपने अपना न्यूक्लियाई बन जाएगा. ठीक है, ये तो हुआ एनिमल सेल का. प्लांट सेल में भी सब कुछ यही है. इन अ प्लांट सेल, मैम मुझे स्लाइड्स नहीं दिख रहे. स्लाइड्स नहीं दिख रही, नहीं. कुछ हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम. बाकी सारे बच्चों को स्लाइड्स दिख रही है? यस मैम. मैम वो पिन Yes, कर ma'am. मैम शायद उसने पेन पे बटन नहीं दबाया. हो सकता है कि शायद आपने देखो, आप अपने मोबाइल में देखो या नेटवर्क नहीं होगा. ऐसा सबको दिख रहा है, मुझे भी दिख रही है स्लाइड. ओके, ये जो एनिमल सेल में जो डिवीजन है ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है प्लांट सेल में. प्लांट सेल में सब कुछ तो वैसे ही होगा, कायरोकाइनेसिस फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, मतलब पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा. बट एक डिफरेंस यहाँ पे ये आ जाता है कि ये एनिमल सेल में एक फरो बन जाता है, ये बीच में जो आपको दिख रहा है. बट प्लांट सेल में कोई फरो नहीं बनता है, यहाँ पे एक सेल प्लेट बनती है. और मैंने आपको सेल वाला चैप्टर पढ़ा रही थी, वहां मैंने आपको एक वर्ड बताया था, मिडल लैमिला. ओके, तो यहाँ पे ये मिडल लैमिला की फॉर्मेशन होती है जो पूरे साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देता है. तो ये आपको हमेशा याद रखना है कि एनिमल्स, इफ वी टॉक अबाउट एनिमल सेल, तो एनिमल सेल तो डिवाइड करता है बाय द क्लीवेज फरो. बट if it is a plant cell then it will always divide by the cell plate formation. तो यहाँ पे जो formation होगी वो कैसे होगी, that will be cell plate formation. ठीक है, and as a resultant two cells will be formed, both having their own nucleus and the cytoplasm, right? Yes, these are the different stages of mitosis. पहला इंटरफेज आपको बता दिया जिसमें आपका सिंथेसिस था, G1 था, G2 था, फॉलोड बाय प्रोफेज. देन प्रोफेज को कुछ बुक्स में यहाँ पे अर्ली और यहाँ पे लेट प्रोफेज होता है ये एक ही फेज है. इसमें दो डायग्राम्स कभी कभी आ जाते हैं कि प्रोफेज जब स्टार्ट होता है तब कैसा होता है, बाद में जब एंड होता है तब कैसा होता है. तो ये हम कल की क्लास में पढ़ेंगे. दिस इज फॉलोड बाय मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज, एंड देन इट इज फॉलोड बाय, क्योंकि ये सारे के सारे डिविजन क्या थे, ये सारे डिविजन थे आपके न्यूक्लियस को डिवाइड करने के लिए. अब बच गया आपका साइटोप्लाज्म. तो ये सब यहाँ तक तो हो गया आपका न्यूक्लियस डिवाइड. ये देख रहे हो ये पूरा न्यूक्लियस है और ये अब ये दो न्यूक्लियस बन गए, 1 and 2, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया. अब यहाँ पे साइटोप्लाज्म तो एक ही है तो साइटोप्लाज्म भी यहाँ पे जाके डिवाइड हो जाएगा एंड टू डॉटर सेल्स विल बी फॉर्म बाय साइटोकाइनेसिस. So karyokinesis is followed by cytokinesis, right student? So we'll end up our class here. So I'm stopping the sharing mode. Just a minute student. Actually, my voice is reaching to you? Yes ma'am. Actually, this PowerPoint, it is not responding. It was not responding. Okay, so now we are again over to screen. So today we have seen what happens in interphase and what are the different steps which take place in the process of mitosis. Okay, and in tomorrow's class we'll see what are the steps that are present in the different steps of mitosis. Okay, so now this is the time for your attendance. So if you have any doubt,
आप क्लास के लिए रुको, और अगर आपका डाउट नहीं है यू कैन लीव द क्लास, पर अटेंडेंस देने के बाद जाना। ओके ये स्टूडेंट्स, so today is okay Deepal, Present, ma'am. then Harshit Yadav, Present, ma'am. roll number 4, Present, ma'am. roll number 6, Present, ma'am. roll number 7, Present, ma'am. 10, Present, ma'am.